हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 4.5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आपने ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है अपने फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसकी किस तरह की इक्वेशन होगी, राइट। एंड इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस उसकी किस तरह से इक्वेशन होगी। सो उस पे जाने से पहले अब हम पहले एक बार और एक चीज़ और देख लेते हैं इस वीडियो में, विच इज़ लेट्स से ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, राइट। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, राइट। अगर मेरे से पूछा जाए कि मेरे पास एक्स एक्सिस की खुद की क्या इक्वेशन होगी और वाई एक्सिस की खुद की क्या इक्वेशन होगी, राइट, तो वो हम कैसे देखें, राइट। दिस इज़ माई ऑरिजिन 0,0, राइट। ऑन एक्स एक्सिस आई हैव 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, right, and so on. And similarly on y-axis I have 0,1, right, 0,2, 0,3, right, and similarly on the negative sides as well, right. So अगर मैं देखूं x एक्सिस पे हमेशा क्या है, y इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमने पिछली वीडियोस में भी हमने देखा है, हमने जब x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स निकाले थे तो वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 0 बिकॉज x एक्सिस पे इट्स ऑलवेज y इक्वल्स टू 0. So this is my equation of x axis, equation of x axis, right, y equals to 0. Similarly equation of y axis is x equals to 0, right. इसको हम इधर एक बार मेंशन कर देते हैं. Equation of x axis is y equals to 0 and equation of y axis is x equals to 0, right. अब हम आगे चलते हैं. उसमें एक एग्जांपल और दे रखा है. उसने कहा कि x, लेट्स से x minus 2 equals to 0. So this is linear equation in one variable because यहाँ पे सिर्फ मेरे पास x है, y is missing, right. So अगर इसको मेरे को प्लॉट करना हो अपनी नंबर लाइन पे, right, so इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, so add 2 on both the sides, so it will become x equals to 2, right. So अगर मेरे को अपनी नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना हो, let's say this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, right, -1, -2 and so on. So x equals to 2 ये यहाँ डिनोट करेगा, right. But if I represent this equation in two variables, so this will become x plus 0 into y equals to 2, right. अब ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है, सो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. और इसको अभी हम प्लॉट करके भी देख लेते हैं, राइट. तो पहले मैं देखता हूँ, देखो मैं अगर y को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूँ, राइट, यहाँ पे बिकॉज 0 इंटू वाई बिकम्स 0, सो y की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2. लेट्स से एक मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करता हूँ, राइट. तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y लिया. सो y की किसी भी वैल्यू के लिए, बिकॉज 0 इंटू वाई बिकम्स 0, राइट, एंड फाइनली वी गेट x इक्वल्स टू 2. So let's say if y is 1, y is 2, y 3, 4, 5 और y की कोई भी वैल्यू हो, x will always remain 2, right. For example, substitute x equals to, y equals to 1 in this equations, so it will become x equals to 2, right. So कुछ भी आप substitute कर दीजिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, x equals to 2 for any value of y here, right. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ अपने कार्टेशियन प्लेन पे, so this is my x axis, this is my y axis, right. So this is origin 0,0. We have 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, let's say 4 and 5, right. So ये वाला टेबल मैं उठा लेता हूँ. So I will go and first plot 2, 1, right. So this is 2. Here we have 1. So this point is 2, 1. Then I go and plot 2, 2. Here it is 2, 2. Then 2, 3, 2, 4, 2, 5, right. So x equals to 2 is this line, right, passing through all these, right, and parallel to this y axis, right. This distance is 2, right. So x equals to constant denotes a line
पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया है, करेक्ट। सो इफ आई रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये अपने हमारे पास जो नंबर लाइन होगा उस पे x इक्वल्स टू 2, दिस इज जस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अगर मैं इसको टू वेरिएबल्स में डिफाइन करता हूँ, राइट, एंड आई पुट y एनी वैल्यू ऑफ y, सो आई गेट for y 1 2 3 4 5, so x becomes constant, which is x equals to 2 every time, right? And this equation is a line parallel to y axis, so x equals to constant is a line parallel to y axis, right? ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, करेक्ट। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। So we have example number 9 then. So we have example number 9, which says solve the equation 2x plus 1 equals to x minus 3. So we have to solve this equation and represent the solutions on first is number line पे represent करना है उसको, number line पे represent करना है, and then second we have to represent this in Cartesian plane, okay. सो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर मैं राइट साइड पे चाहूँ कि मेरे पास 0 आ जाए, सो आई विल गो एंड सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट। सो 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x minus x minus 3. So this becomes 0. 2x minus x becomes x plus 1 equals to minus 3. Okay. Now I will go and subtract minus 1 from both the sides, right? Because I will get x here. So x plus 1 minus 1 equals to minus 3 minus 1, right? So this becomes 0. So x equals to minus 4. So this is my solution, right? In one variable. If I have to represent it in two variables, I would go and say, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, adding 4 on both the sides, x plus 4 equals to 0, right? So I can represent this equation in two variables as x plus 0 into y plus 4 equals to 0, correct? So this is in two variables and above equation is in one variable, right? अब इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो नंबर लाइन पे कैसे होगा? दिस इज माय नंबर लाइन, राइट। 0 1 2 3 4, वी हैव -1 -2 -3 एंड -4, इस तरह से, राइट। x equals to -4 would lie here, right? Similarly, this line is x equals to constant, means it would be parallel to y axis, right? अब इसको टू वेरिएबल्स में प्लॉट करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं इसको। This is my x axis, this is my y axis, right? 0, 0. So यहाँ पे हम बोलेंगे -1 -2 -3 -4 -5, राइट? इस तरह से 1 2 3 4 5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, मीन्स y 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, राइट? वी विल गेट x इक्वल्स टू -4. सो इफ y is 1, y is -4, right? If y is 0, x is -4. If y is 2, -4, 3, -4, right? चाहे y कुछ भी हो, राइट? -1 हो तो भी ये -4 ही रहेगा, -2 हो y तो भी -4 ही रहेगा, राइट? Because 0 into y becomes 0, so for any value of y, we will get these points, right? Which is a line parallel to y-axis, right? Parallel to y-axis, correct? And this distance from y-axis is -4, जो कि आपको ये दिख भी रहा है यहाँ पे, correct? So we have solved it, we have plotted it, right? And then we'll go to next exercise, which is exercise number 4.4, which is the last exercise of this chapter. So I hope आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं, and इतने कम टाइम में, like, अगर आपने पूरी सीरीज़ देखेंगे, so it will be almost like 2.5 hours या 3 hours की ये सीरीज़ है, and you will able to understand all the things for this chapter, right? So we'll go for exercise 4.4 now, right? So first question is question number 1. It says give the geometric representation of y equals to 3 in one variable. So one variable में इसका geometric representation क्या हो जाएगा? Let's say this is my number line 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, right?
Okay, so y equals to 3 would be here, right? If my number line denotes y coordinate, right? So y equals to 3. So if I have to represent it in two variables, then first I have to express it in two variables, right? So इसको अब two variables में कैसे express करें? So this becomes 0 into x plus y equals to 3, correct? So this is representation in two variables. और ये y equals to constant है, that means it would be parallel to x axis, right? अब इसको एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं. ठीक है, so this is 1 2 3 4 5 x axis, this is my y axis, 1 2 3 4, okay, 4 3 2 and 1, this is my origin 0, 0, right? एक फर्स्ट टाइम है तो एक टेबल भी बना लेते हैं इसका हम, ठीक है. So x and this is y. So we can substitute x as 1 2 3 4 5 or any value of x, right? 1 2 3 4. So the solution would come as y equals to 3 always, right? So if I substitute x as 1, so this becomes 0 and I'll get y equals to 3, right? So I'll get 3 every time. Right, now we plot these points 1 comma 3, correct? So we have 1 comma 3 here, we have 2 comma 3 here, 3 comma 3, right, 4 comma 3. And similarly, if you put x equals to minus 1 minus 2 minus 3, so still you will get y equals to 3, right? So this is 3, right? So this is a line parallel to, so this denotes y equals to 3, or 0 into x plus y equals to 3 on Cartesian plane, right? Which is a line parallel to x-axis, right? And this distance is 3, okay? Now we move to another question, question number 2. This is question number 2. It says, give the geometric representations of 2x plus 9 as an equation. Okay, so this is 2x plus 9 equals to 0 as an equation in one variable and an equation in two variables. So we'll solve for x here, subtracting 9 from both the sides. 2x equals to minus 9, dividing by 2, x equals to minus 9 by 2, or this is minus 4.5, right? Now we'll represent this equation in two variables, right? So this becomes 2x plus 0 into y plus 9 equals to 0. So this is the representation in two variables, okay? अगर इसकी geometric representation देना है, let's say this is my number line which denotes x. So I have 1 2 3 4 5, right? And on this side minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5, right? So minus 4.5 would lie here between minus 4 and minus 5. So this is my representation which says x equals to minus 4.5, right? Or 9 by 2, minus 9 by 2, right? So in two variables, if I have to go and plot this one, so I'll go draw this line. So this is x equals to constant, so that means it would be parallel to y-axis, right? Here I have 0 comma 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, and so on. 1 2 2 3 4 5 6. Okay, this is my y-axis. 1 2 3 4, right? So for any value of y, so let's say y is 1, so x would be minus 4.5. So 1 comma 4.5 would lie somewhere here, right? 4.5, 2, y value is 2, x is minus 4.5, y value is 3, x is minus 4.5, right? Y value is 4, x is minus 4.5. So we get this line, right? Which is parallel to y-axis. This line denotes x equals to minus 4.5, right? This distance is minus 4.5, right?
So we have denoted this line in one variable, in two variables, and we have the graphical representation as well. This is the graphical representations, right? Right. So now we move to the summary of this chapter, right, which is section 4.6. I think ये सारी चीज़ अब आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही बारी में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, but I'll repeat for you. So first statement says, and equations of the form ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are the real numbers, ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are the real numbers such that a and b both are not 0 at the same time is called a linear equation in two variables. ये हमने अपने first chapter में देख लिया था, right? Second line says, or the second statement says, a linear equation in two variables has infinitely many solutions, right? It has infinitely many solutions. ये भी हम पढ़ चुके हैं, correct? Third is, the graph of every linear equation in two variables is a straight line. Is a straight line, correct? And this is very important because इस तरह की equations का graph हमेशा एक straight line आता है, and this is also a reasons why we call this type of equations as linear equations. Okay. Now we move towards the statement number 4, which says x is equals to 0 is equation of y-axis and y equals to 0 is the equation of x-axis. ये हमने अभी इस वाले मॉड्यूल में पढ़ा है, इस वाली वीडियो में भी देखा है हमने, करेक्ट? Statement number 5 says the graph of x is equal to constant is a straight line parallel to y-axis. ये हमने अभी इस वीडियो में भी देखा है, पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करा था. Statement 6 says y equals to constant is a straight line parallel to x-axis. Right? ये भी हम देख चुके हैं easily. Now we'll move to statement number 7, which says an equations of the type y equals to mx represent a line passing through origin. ये भी हम देख चुके हैं. This line will always pass through origin, right? And last statement says every point on the graph of a linear equation in two variables is a solution of linear equations, right? So हमने जितने भी solution निकाले हैं, so they all will lie on this equation, right? And these points are known as the solution of this linear equations. Moreover, every solutions of linear equation is a point on the graph of linear equation, right? So this is vice versa. So point अगर lie कर रहा है तो that is a solution, right? And अगर linear equation के जितने भी होंगे, moreover every solution of a linear equation is a point, right? तो कोई भी solution होगा तो that point will lie on that particular line, right? So this is statement number 8. And इसके साथ हमारा chapter finish होता है. I hope आप सबको समझ आया होगा. अगर कोई भी query है आपकी, right? So you can put it in the comment section. And यहाँ पे मैं आपको कुछ lines और दे देता हूँ. For example, bonus questions बोलता हूँ मैं इनको, okay? These are like bonus questions for you guys. So, okay, so question number 1 is you have to go and plot this line 9 by 5x plus 2 by 3y equals to 1. Okay, so please go and draw the graph of this line and provide some solutions as well. Right? Another question is go and draw for like 4x plus 3y or 4 by 9x 3 by 6y equals to 3. Okay, ये दो क्वेश्चंस हैं. आप प्लीज़ इनको जाइए, ट्राई करिए, इनके सॉल्यूशंस निकालिए, इनको प्लॉट करिए, राइट? प्लॉट देम एज वेल. एंड अगर इनको करने में आपको कोई इश्यूज आते हैं, then we can solve these in the next videos, right? So thank you again for watching, and please like, share and subscribe.